ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन। ये घटना चक्र का पीटीआर जो है पीटीआर, ये इंटरनेशनल पार्ट जो है पीटीआर मतलब पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर इन शॉर्ट पीटीआर। तो उसका जो इंटरनेशनल पार्ट है वो हम लोग आज पढ़ेंगे। एंड मैं ये कंटिन्यू मैंने आपको फर्स्ट दिन से ही बोला कि ये घटना चक्र जो आया है दृष्टि का, ठीक है, ये हम लोग फुल्ली कवर करेंगे अप टू लास्ट। लेकिन मैं यूपी का करंट अफेयर्स एंड बिहार का करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ाऊँगा। इफ़ यू नीड द पीडीएफ देन आई विल प्रोवाइड इट, बट बाकी सब हम लोग कवर करेंगे इन दिस पीडीएफ फॉर्मेट। तो लेट्स स्टार्ट, ओके। So first question was, where was the 52nd G7 summit held in 2026? कहाँ हुआ था? फ्रांस पे हुआ था। इन शॉर्ट मतलब इवियन लेस पाइंस ये उन लोगों का प्लेस है। ये याद रखिएगा कि G7 समिट जो 57 वो 2026 में कहाँ हुआ था? जून महीने फ्रांस में हुआ था। तो डन। हाँ, सेकेंड, हु लेड फ्रांस G7? सो ऑब्वियसली फ्रांस में हुआ तो प्रेसिडेंसी तो इमानुएल मैक्रोन ही लेगा, क्योंकि वो फ्रांस का एट प्रेजेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर है कि नहीं? ओके। What was the theme of the G7 Summit 2026? थीम क्या था? Working together to address major international challenges. ओके, ये भी याद रखें कि working together to address major international challenges, ठीक है। Who represented India? Obviously our Prime Minister मोदी जी, है कि नहीं? तो नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। What declaration was adopted at the G7 Summit 2026 to curb migrant smuggling? जो माइग्रेंट का स्मगलिंग होता है वो करने के लिए क्या एडॉप्ट किया है? लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन टैकलिंग माइग्रेंट स्मगलिंग। कुछ भी नहीं, उतना लीडर्स डिक्लेरेशन, ये याद रखिएगा। Which initiative was introduced by Japanese PM Takaichi at G7 Summit 2026? Power Asia, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। Where was the 16 BRICS Agriculture Ministers मीटिंग हेल्ड? कहाँ पे हुआ था 16 ब्रिक्स का? इंडो मध्य प्रदेश। अंडर हुज ब्रिक्स प्रेसिडेंसी वाज द 16 ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? इंडिया में हुआ था। ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और उसके बाद भी और देश ऐड हुआ है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। What declaration was adopted at the 16 BRICS Agriculture Ministers Meeting? इंडो डिक्लेरेशन। क्योंकि मध्य प्रदेश पे हुआ था तो जो भी डिक्लेरेशन होगा तो ऑब्वियसली उसका कैपिटल से ही होता है, स्टेट का। जैसे दिल्ली में हुआ था तो दिल्ली डिक्लेरेशन बोला था G20 में, और ये इंडो डिक्लेरेशन। Which is Slovakia's highest national award given to PM Modi? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, ये याद रखिएगा, स्लोवाकिया में। हाँ, ऑर्डर ऑफ द और भी याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ मोदी जी ने अभी हाईएस्ट नेशनल अवार्ड जीता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अलोंग विथ दिस हम लोग जब भी पढ़ेंगे और थोड़ा आगे, तब हम लोग को सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री में मोदी जी को अवार्ड्स मिला है। तो नेक्स्ट, Slovakia's highest national award was presented to PM Modi in which city? Bratislava, ठीक है। Which country became the 10th member of the New Development Bank in June 2026? Uzbekistan, ठीक है। Who was elected president of the UN General Assembly 81st session? Khalilur Rahman, बांग्लादेश। कौन प्रेसिडेंट बना यूएन जनरल असेंबली का 81st सेशन का? खलीलुर, नॉट कलीलुर के, खलीलुर रहमान। ओके, खलीलुर रहमान डिफीटेड whom in the UNCA इलेक्शन? एंड्रेस काकाउरिस, साइप्रस का था वो, ठीक है। When will खलीलुर रहमान सिमेंजियन टर्म स्टार्ट? 8 सितंबर 2026 से स्टार्ट होगा, अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है।
Khalilur Rahman's. Okay, which institute top India in Quacquarelli Simons World University Rankings. So एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये QS कौन टॉप किया है? IIT दिल्ली. What was IIT Delhi's global rank in QS World University Rankings? 118. Which university retained the global top spot in QS World? Obviously MIT होगा. How many Indian universities were included in QS World University Ranking 2027? 52. ये याद रखिएगा. हाँ. Who assumed office as the Prime Minister of Slovenia? Janez Jansa. J square. Slovenia. ओके. स्लोवेकिया होना चाहिए था. स्लोवेकिया है भाई, स्लोवेनिया तो नहीं है. मैं चेक करके आप लोगों को अभी बताता हूँ. ओके, रुकिए थोड़ा. स्लोवेनिया लिखा है, ये स्लोवेकिया होगा मोस्ट प्रोबेबली. Who assumed office as the new Prime Minister of Senegal? न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सेनेगल का कौन हुआ है? आमादो अल अमीलो लो. ठीक है, मतलब AQL. ये J स्क्वायर था. प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया. स्लोवेकिया होगा. ठीक है, स्लोवेनिया कोई भी कंट्री नहीं है. फिर सेनेगल का हो गया AQL. Then to combat which deadly epidemic in Africa did the government of India recently send a 45.5 ton consignment of medical aid? Ebola. ठीक है. Reporters Without Borders RSF classifies country into 5 categories in the World Press Freedom Index. In which category has India been placed? Difficult category. What is India's rank? 157. Reporters Without Borders. मतलब ठीक है, ये बायस भी हो सकता है. ठीक है, ये सब रैंकिंग ना वर्ल्ड प्रेस थोड़ा बायस भी हो सकता है. 157 याद रखिएगा. Which international organization released the Global Hepatitis Report 2026? World Health Organization. Okay. According to the latest World Health Organization report, which two types of hepatitis together account for more than 95% of deaths related to viral hepatitis worldwide? Hepatitis B and C. Who recently became the Prime Minister of Iraq? Al-Fali Khadim al-Zaidi. Ali Fali. Iraq का. Ali Fali Khadim al-Zaidi. Iraq. Okay. India signed a bilateral accession protocol in support of which African countries accession to the World Trade Organization? Ethiopia. फिर से हम लोग पढ़ेंगे. India signed a bilateral accession protocol in support of which African countries accession to the World Trade Organization? Ethiopia. Okay. Where in South Korea did India's Defense Minister Rajnath Singh inaugurate the Indian War Memorial? इमजिंगत पार्क में किया था. ठीक है, ये भी याद रखिएगा. फिर where was 8th India France Maritime Cooperation Dialogue held? कहाँ पे हुआ था? पेरिस पे हुआ था. फिर which country joined the India-led International Beacon Alliance 26 members? Saudi Arabia. Which countries announced the establishment of a new NATO tactical headquarters in the Baltic region? Germany and the Netherlands. Where was the 79th World Health Assembly held? कहाँ पे हुआ था? World Health Assembly Geneva में हुआ था. Which major Gulf country decided to formally withdraw from the Organization of the Petroleum UAE OPEC पे? OPEC से Organization of the Petroleum Exporting Countries with effect. कौन सी कंट्री? UAE. जब वार हुआ था तभी किया था. In which city was the meeting of the defense ministers of the Shanghai SCO Cooperation Organization held?
बिस्केक किर्गिस्तान में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रिपोर्ट on food crisis 2026, which country was included among the top 10 countries with the largest number of people facing high levels of acute food insecurity? कौन सी है? पाकिस्तान. Which country hosted the first meeting of the BRICS Health Working Group in 2026? इंडिया. ब्रिक्स हेल्थ, ब्रिक्स से रिलेटेड 2026 में जो भी आएंगे इंडिया ही होगा आंसर. Where was the first meeting of the BRICS Health Working Group in 2026 held? In New Delhi. Who is the current president of South Korea who paid a state visit to India? Lee Jae-myung. LJM in short. LJM. Okay, ये याद रखिएगा इसे. Lee Jae-myung. During the meeting between Prime Minister Modi and the President Lee Jae-myung, which two major emerging sectors were specifically highlighted for cooperation? Semiconductors and shipbuilding. साउथ कोरिया के साथ, ठीक है, ये याद रखिएगा. फिर which country hosted the 9th Indian Ocean Conference (IOC)? Mauritius. What was the main theme of the 9th Indian Ocean Conference? Collective Stewardship for Indian Ocean Governance. Mauritius पे हुआ था. Who assumed office as the Prime Minister of Mongolia? उत्सराल नियम असौर. UNO मंगोलिया का जो प्राइम मिनिस्टर है. Which annual edition of the QS World University Rankings by subject was released? कौन सी एडिशन था? 16. ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. मैं एक चीज देख रहा हूँ कि कितना है और, ठीक है. अच्छा इतना तक है, ठीक है, हो जाएगा. और अभी जल्दी जल्दी पढ़ूंगा. ओके. Where is the headquarters of QS, the prestigious organization that releases this annual global ranking? कहाँ पे है? लंदन, यूके पे है. Who released the 13th edition of the Global Terrorism Index? Institute of Economics and Peace. Which country was the most affected by terrorism worldwide? Pakistan. What does India's rank among the 163 countries in the Global Terrorism 13 Index? Which country ranked first in the world happiness? So obviously Finland here for the 9th consecutive year. Which countries ranked second and third respectively? Iceland and Denmark. What was India's ranking in World Happiness Index? 116. Where was the Mobile World Congress held? Barcelona पे हुआ था, Spain. Which organization released the Corruption Perception Index 2025? Transparency International. Where is the headquarters of Transparency International? The organization that releases this index, Berlin, Germany पे. What was India's rank among the 182 countries in the Corruption Perceptions Index? 91st. Where was the fourth meeting of India-Tanzania Joint Defence Cooperation Committee held? Zanzibar, Tanzania पे हुआ था. Who led the Indian delegation? Amitabh Prasad, Joint Secretary. Who led the Tanzanian delegation? Ibrahim Ona. Where was the World Government Summit 2026 held? Dubai, UAE. What was the main theme of the summit? Shaping future governments. Which country did Indian Prime Minister Narendra Modi recently visit? जो फरवरी महीने में मलेशिया गया था मोदी जी. Which Prime Minister of Japan did Prime Minister Narendra Modi congratulated on her historic victory? The House of Sanai Takaishi. ये वुमेन है, महिला है, ठीक है. What distinction does Sanai Takaishi hold? She is Japan's first woman Prime Minister. Which party does Sanai Takaishi lead? Liberal Democratic Party, LDP. Patrick Hamini, the president of which country visited India? Seychelles. What was India's rank in the Global Innovation Index? 38. Important है ये. Where was the first meeting of the India-US Drug Policy Executive Working Group held? Washington DC. Who led the Indian delegation? Monica Ashish Batra.
In which index was Abu Dhabi ranked as the world's safest city in 2026? Now, in which index, acha, was Abu Dhabi ranked as the world's safest city in 2026? Lombio Crime Index by city. Number yo. Okay. Numbio. Numbio Crime Index by city. What was India's rank in the Asia Manufacturing Index? 6. Asia Manufacturing Index में हम लोग 6 पे है. Which country top? Obviously China होगा manufacturing पे एशिया में. Even world में भी number 1 ही है manufacturing में China. Which country legalized cryptocurrency mining and trading? Turkmenistan. Where was Venezuelan President Nicolas Maduro arrested during the US? Where was Caracas पे था वो जब US ने अरेस्ट किया था निकोलस मडुरो को. For how much was the 400-year-old painting Christ on the Greece auction for? 2.3 million euros. बहुत है. Who painted it? Peter Paul Rubens. Which think tank released the Asia Power Index 2025? Lowry Institute Australia. ये बहुत important है. ठीक है, ये आता है क्वेश्चन. What India did secure third rank? Asia में third. Which countries occupied the first two positions? USA and China. In which country is the first campus of the IIT in West Africa proposed to be established? ये important IIT West Africa में कौन से होगा? नाइजीरिया पे होगा. In which country did the World Health Organization declare polio outbreak over? Indonesia. Who won Miss Universe 2025? Fatima Boss of Mexico. ये important है. ठीक है. Which world award did Cambridge Dictionary select as its word of the year 2025? Parasocial. Parasocial. Okay. P-A-R-A. Parasocial. Where was the World Telecommunication Development Conference 2025 held? Baku, Azerbaijan. Where was the third International Ayurveda Conference held? ये important है. थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है. इंडिया ये सब नहीं है. साओ पोलो ब्राजील. ठीक है. What rank did India secure in the Climate Change Performance Index 2026? 23rd. Where was the 2025 Asia Pacific Economic Cooperation APEC Economic Leaders Meeting held? South Korea पे हुआ था. Gyeongju, South Korea. What was the theme of the APEC summit? Building a sustainable tomorrow, the three priorities were connect, innovate, prosper. Where is the APEC secretariat located? Singapore पे है. Which Indian city was designated a UNESCO Creative City of Gastronomy? Lucknow. Important है. UNESCO Creative City of Gastronomy. Which American scientists were announced as the recipients of the 2025 Nobel Prize in Physics? John Clark, Michel S. Devoret and John M. Martinez. मतलब दो जॉन और एक मिखेल. ठीक है, एक मिखेल और दो जॉन. फॉर अचीवमेंट्स इन व्हिच, ये कौन से फिजिक्स में? ठीक है, फिजिक्स. For achievements, Nobel Peace Prize in Physics. For achievement in which field was the 2025 Nobel Prize in Physics awarded? कौन सी achievement के लिए? Research on quantum mechanics and electrical circuits पे. For what for what discovery did this scientist receive the 2025 Nobel Prize? He discovered macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in an electric unit. ठीक है. सो ये क्वांटम से ही रिलेटेड है. मैक्रोस्कोपिक क्वांटम. ठीक है, ये याद रखिएगा. Which institution announced the 2025 Nobel Prize in Physics? Royal Swedish Academy of Sciences. Swedish Academy है. ठीक है. Who won the Nobel Prize 2025 in Chemistry? Omar M. Yagi, Susumu Kitagawa, रिचर्ड रॉबसन. एक हो गया ओमा
एक हो गया सुसुमो, एक हो गया रिचर्ड, ठीक है, किटागावा है, एक हो गया ओमर, हु वन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पे किसने किया था? ओमर, सुसुमो और रिचर्ड, 3 लोग। फिजिक्स पे भी 3 लोग, जॉन डो था और एक मिखेल था। इस पे ओमर है, सुसुमो है और रिचर्ड है, ठीक है। The 2025 Nobel Prize in Chemistry was awarded for developing what? Metal Organic Framework। ये metal organic framework है, ठीक है। Who won the Nobel Prize 2025 in Physiology or Medicine? मेरी फ्रेड सिमोन, ये याद रखिएगा, मेरी फ्रेड सिमोन। मेडिसिन पे भी 2, मेरी फ्रेड सिमोन, ओके, MFS, मेरी फ्रेड सिमोन। Who won the Nobel Prize in Literature? लास्लो क्रास्नाहोकाई, ये इम्पोर्टेंट है। लास्लो लिटरेचर पे क्रास्नाहोकाई। Who won the नोबेल प्राइज पीस, नोबेल पीस प्राइज, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मेरिया कोरिना माचाडो, वेनेजुएला का। MCM, ओके। Who won the Nobel Prize 2025 in Economic Sciences? Economic Sciences पे जोल फिलिपी एंड पीटर। इकोनॉमिक साइंसेस पे JP², ठीक है, इकोनॉमिक साइंसेस। तो हो गया हम लोग का इंटरनेशनल। अभी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड करता हूँ मैं। एंड इंटरनेशनल पार्ट का हो गया, अभी मैं नेक्स्ट इकोनॉमी पार्ट लेके आऊँगा आप लोगों के साथ। थैंक यू। लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा ये वीडियो।